To interrupt you again, Ananya and Anvit, please stay on with me. I have Mr. A.K. Singh, who is Sukesh Chandrashekar's lawyer, who's now joining us on the broadcast. Mr. Singh, thank you so much. This letter was written by Sukesh on the 7th of October. It has come out now. We're talking about it now. What really prompted him to write this letter? And since he's talking about 2015, that is the year since the time that he knows Mr. Satyendra Jain, why did he take so many years to actually put this out in the public domain and also reach the Lieutenant Governor of Delhi with these allegations? See, the very purpose of writing this letter by my client is to the LG is to seek just an independent inquiry so that the matter can be investigated independently. Because this kind of matter and the information is already with the ED, already with the EOW, already with the CBI. We have filed a complaint to the CBI. We have filed to recorded my voluntary statement client before the ED and the EOW. But despite that, no concrete action has been initiated so far. So after getting frustrated by all these investigation agencies having dealt with the issue, my client might have thought to write to the LG, and he wrote a letter in the form of complaint to the LG and just instructed me to place it on record before his office because my client is in jail. When I went him to meet for the legal mulaqat, he handed over me a letter, and I just wrote a covering letter of that complaint and placed it before the office of LG through a speed post. All right, Mr. Singh, please stay on. We have a reaction by Aam Aadmi Party chief. Let's actually play that out for our viewers first, and I'll come back to you, Mr. Singh. Now, Arvind Kejriwal has in fact responded on these allegations by Sukesh Chandrashekhar on this very letter that he had written to the Lieutenant Governor of Delhi. Now, he goes on to say that it is the same manner in which BJP has to rely on a con man that shows that BJP is in a sorry state of affairs. Sukesh Chandrashekhar, as you say, is a con man. This has been done to divert attention from the Morbi tragedy in Gujarat. And he also further goes on to say that what can be more blatant, as this is entirely fictitious. They have found nothing against Manish Sisodia as well. Let me actually take this back to Mr. Singh. Mr. Singh, you have seen how the Aam Aadmi Party chief is choosing to respond to these huge and grave allegations by Sukesh Chandrashekhar and in turn the BJP. Madam, first of all, I have an objection that my client is being called a con man by any other, even by the media, by the Kejriwal or by the whatever. Because there's the allegation, right, running against him. Sir, it is out in the public domain how he has impersonated big influential personalities and conned so many people. That is the reason why he is incarcerated, he is lodged in jail. Madam, this is the allegation. This is a mere allegation. Nothing has been proven out of the court in the court. All right, so make your point. Yes. Yes. And the trial is going on. And out of 21 cases, in none of the cases he has been convicted. Please respond to what Aam Aadmi Party has to say, Mr. Singh. So we have a strong objection to name my client as a con man. Okay. So please react to what we have just heard Mr. Kejriwal say, sir. I don't know. By the way, in the same way, there are the many ministers and many persons of the Aam Aadmi Party is also been indulged in the case of the forgery and the cheating. So they may also be termed as a con man. Sir, वो कह रहे हैं कि this is fictitious. They are clearly saying that this is fictitious. How do you respond? मैं यही कह रहा हूँ कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए. अगर आरोप लगते हैं तो क्रिमिनल लॉ का बड़ा बेसिक का एक प्रिंसिपल है कि अगर आरोप लगा है तो आपके ऊपर जांच होगी. तो जांच से क्यों भाग रहा है? और मैंने एलजी साहब को जो लेटर लिखी है उसका पर्पस ही तो यही है कि सिर्फ आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी आप ऑर्डर करिए और इस पर जांच करवाइए. सिंह साहब, एक बात बताइए, जो मैंने आपसे पहले सवाल किया था, 7 अक्टूबर को ये लेटर लिखा गया है. अभी मोरबी ट्रेजेडी के बाद ये एलिगेशंस आपके तौर पे सामने आ रहे हैं. I'm really sorry. I'll have to cut across to the BJP press conference that is being spearheaded by Mr. Sambit Patra. Let's first take a look at that. के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया, बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है
और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। लगभग 15 एफआईआर सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। बड़ी बड़ी एजेंसियां सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जांच कर रही है। घूसखोरी, उगाही, फॉर्जरी, जालसाजी, ये सारे चार्ज सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ऐसे महान सुकेश चंद्रशेखर के मित्र, आम आदमी पार्टी के मंत्री जो वर्तमान में जेल के चारदीवारी में बंद हैं, तिहाड़ में बंद हैं, वैसे सत्येंद्र जैन स्वयं थे। तो ये सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन दोनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जोरदार मित्रता थी इनके बीच में और ये एक चिट्ठी में सामने आया है। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। जस्ट इमेजिन, अ पार्टी विच केम विद द प्रॉमिसिंग ऑफ चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 50 करोड़, वो 50 करोड़ लेती है केवल इसलिए क्योंकि उसने किसी को वादा किया है कि हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और अखबार में यह भी मालूम पड़ता है कि एक चिट्ठी लिखा है सुकेश चंद्रशेखर जी ने एलजी साहब को। उस चिट्ठी की एक प्रति हमारे पास है, वो चिट्ठी हम आपको दिखाएंगे भी और उसके कुछ एक्सर्प्ट जो है आपके सम्मुख रखेंगे। मगर मोटा मोटी उस चिट्ठी में क्या लिखा है? उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि जब मैं तिहाड़ में बंद था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ। 2017 में ये सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होता है और सत्येंद्र जैन जो उस समय जेल मंत्री थे, कई बार जेल में अपने मित्र, अपने यार सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाते हैं। और 2019 में पुनः जब ये जेल का पोर्टफोलियो सत्येंद्र जैन के पास आता है और सत्येंद्र जैन अपने मित्र से मिलने जाते हैं तिहाड़ जेल, तो उनके खुद के लोगों ने, उनके सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है, उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए। प्रति माह 2 करोड़ रुपए आप प्रोटेक्शन मनी के रूप में अगर सत्येंद्र जैन को देते हैं तो जेल के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको अंग्रेजी में बेसिक फैसिलिटीज कहते हैं, वो बेसिक फैसिलिटीज आपको मुहैया कराया जाएगा। और प्रत्येक महीने 2-2 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर, जो कि यार है आम आदमी पार्टी का, यार है सत्येंद्र जैन का, 2-2 करोड़ देते हैं और लगभग 10 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी को देते हैं। चिट्ठी पढ़ के मैं बताऊंगा। मुझे तो आश्चर्य होता है। And I would not hitch to say that there is this person called Sukesh Chandrasekhar who is a conman, who was running a syndicate, a crime syndicate from inside the jail, while we have the Aam Aadmi Party and its ministers who are running a crime syndicate outside of the jail. दोनों क्राइम सिंडिकेट कर रहे हैं। एक जेल के अंदर क्राइम सिंडिकेट कर रहा है और दूसरा जेल के बाहर क्राइम सिंडिकेट कर रहा है। आप सोच के देखिए, अन्ना हजारे जी ने चंद हफ्तों पहले जो चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी को लिखी थी, वो कितना सार्थक है। यह पार्टी जो चाल, चरित्र और स्वरूप राजनीति का बदलने आई थी, किस प्रकार से आज यह पार्टी एक कॉनमैन पार्टी के रूप में, इट वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन इफ आई से कि आम आदमी पार्टी इज अ कॉनमैन पार्टी टुडे। यह एक ठग पार्टी के रूप में उभर के आई है। और बंधुगण, जरा सोच के देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये सत्येंद्र जैन इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर जी से 10 करोड़ लेने वाले व्यक्ति को, एक्सटॉर्शनिस्ट से उगाही करने वाले व्यक्ति को
भ्रष्टाचारी के घर में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति अरविंद केजरीवाल जी का जिस प्रकार का असम्मान का भाव है अपने महत्वाकांक्षा के कारण, ये इस सेंटेंस से कि सत्येंद्र जैन डिजर्व्स अ भारत रत्न, ये दिखाता है। बंधुगण, जिस चिट्ठी के बारे में मैंने बताया, आज मीडिया ने ये चिट्ठी दिखाया है। उस चिट्ठी और उस चिट्ठी के कुछ एक्सर्प्ट्स को मैं पढ़ता हूं ताकि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहे। और आज अखबार ने भी लिखा है कि अपने खुद के हैंडराइटिंग में सुकेश चंद्रशेखर ने यह चिट्ठी सबमिट किया है। तो आप देख सकते हैं, यह चिट्ठी सुकेश चंद्रशेखर जी ने 7/10/2022 को लिखा है और उसने यह चिट्ठी अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। और इस चिट्ठी में वो लिखता है, ये एलजी को लिखा है इन्होंने, और सब्जेक्ट है कंप्लेंट ऑफ थ्रेट एंड प्रेशर फ्रॉम सत्येंद्र जैन। मतलब थ्रेट और प्रेशर रहा है कि जो सच्चाई है वो आपको बताना नहीं है। आई हैव नोन सत्येंद्र जैन ऑफ आम आदमी पार्टी सिंस 2015 and have contributed more than 50 crore to the Aam Aadmi Party in promise of giving me important post in party in South Zone and also helping me to be nominated to Rajya Sabha following the expansion. राज्य सभा से नॉमिनेशन के लिए 50 करोड़ दिए। आगे वो लिखते हैं, thereafter in 2019 again I was visited by Satyendra Jain and his secretary and his close friend Mr. Sushil in jail and asking me to pay rupees 2 crore every month to him as extortion money for his safety and in the jail. He forced me to pay a total amount of 10 crores in a matter of 2 to 3 months. 2-3 महीने में 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन लेते हैं। And now Mr. Satyendra Jain is lodged in jail number 7 in Tihar. He has been threatening me through DG prisons. आगे बहुत कुछ लिखते हैं कि सत्येंद्र जैन उनको धमकी दे रहे हैं कि ये सारा विषय आपको सार्वजनिक नहीं करना है। स्वाभाविक है, क्यों नहीं करना है। बंधुगण, ये तो घोटालों का घोटाला है। ठग के घर में ठगी हुई है और ठगी करने वाला महाठग है। और आपने अभी देखा है कि किस प्रकार से शराब घोटाला अभी दिल्ली में हुआ है। किस प्रकार से शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम आया है। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर अभी केस चल रहा है, एफआईआर में उनका नाम है। यह कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे 3 यार, जब मिल बैठेंगे 3 यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कौन ये 3 यार है बताने की आवश्यकता नहीं है, अखबारों ने ये सब खुलासा किया है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि जब आप लोगों ने, हमारे चतुर्थ स्तंभ मीडिया ने आज केजरीवाल जी से कुछ सवाल पूछा इस विषय पे लेकर, तो वो कहां से वो मासूम चेहरा लाते हैं ये पता नहीं। कौन सुकेश चंद्रशेखर, हु इज ही? मतलब पूरे अंदर से आवाज जैसे सच में जानते नहीं है सुकेश चंद्रशेखर। 50 करोड़ रुपए लेके बोल रहे हैं, हु इज सुकेश चंद्रशेखर, कौन है वो? इस प्रकार से उद्गार किया। अरे भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्टासन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये क्या योगासन की बातें कर रहे हैं? जब से सरकार में आए हैं एक एक करके खुलासा हो रहा है, द ओनली आसन दैट द आम आदमी पार्टी नोज इज भ्रष्टासन और कुछ नहीं। और भीख का कटोरा, क्या बोल रहे थे कि मैं भीख का कटोरा लेके निकलूंगा? अरे कहां का कटोरा? कटोरा में कहां से जगह होगा 50 करोड़ रुपए? ये कितने हजार करोड़ रुपए तो आपने मार लिए एक्साइज ड्यूटी से, और ठगों के घर से आप 50-50 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और कटोरा, बोरी बोलिए, बोरी में पैसे बंद कर करके मैं इकट्ठे कर रहा हूं, ये बोलिए केजरीवाल जी। ये आप जनता को ठगने का जो काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन ये सब जानती है। इसका जवाब आने वाले दिनों में जनता जनार्दन आपको देगी। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। चूंकि ये बाइट था, इस कारण कोई प्रश्नोत्तर इस विषय पर नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Conference, Sambit Patra there presiding over that press conference. Of course, BJP is going all guns blazing against the Aam Aadmi Party.
Let's actually cut across to Mr. A.K. ये भी सवाल है कि सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर जेल से लिखा कि उनको धमकी दी जा रही है सत्येंद्र जैन की तरफ से कि वो लेटर का खुलासा न करें। लेटर में कंटेंट में तो है, लेकिन अब इसका क्या है वो जांच होने के बाद। सुकेश से आपकी जो बातचीत हुई जब लेटर देने की बात कही गई, उस समय सुकेश ने आपसे क्या बोला? नहीं, सिंपली आई वाज इंस्ट्रक्टेड टू फाइल दिस कंप्लेंट बिफोर द एल। ठीक ठीक है, हमारे साथ वकील That was Sukesh's lawyer, Mr. A.K. Singh. We just were talking to Mr. Singh as well on the broadcast. That was an exclusive conversation we'd got for you. He had maintained that this was a complaint that Sukesh Chandrashekhar had asked him to file at to the Lieutenant Governor of Delhi, which he did that. Remember, this letter was sent on the 7th of October 2022. The allegations are against Aam Aadmi Party Minister Satyendra Jain along with DG Prison Sandeep Goyal, where corruption and extortion charges have been made against them. Sukesh goes on to say that party position in southern states of the country in Aam Aadmi Party was promised to him, and also a Rajya Sabha nomination from AAP, because of which he was asked to pay 50 crore rupees to the Aam Aadmi Party. He further says that 2 crores per month was the deal that was actually laid out before him, that he needs to pay up in order to be safe inside the Tihar prison. And that's why he ended up paying about 10 crores in 2 to 3 months. This was the extortion charges that Sukesh is laying down. Remember, these charges by the incarcerated conman Sukesh Chandrashekhar really throws open a Pandora's box for the Aam Aadmi Party, because here we are looking at Gujarat elections and also the MCD polls, and this has come in public domain just before that. My colleague Arun Dhanta, who was at the BJP press conference, is now joining us on the broadcast. Arun, very, very stringing allegations. Of course, the BJP will piggyback on this very letter that is now out in the public domain. Well, that's right. We just saw the press conference of BJP's national spokesperson Sambit Patra, and in fact explaining and detailing the entire letter. Sambit Patra calls it an extortion from Aam Aadmi Party, from an extortionist. So he's clearly targeting at Aam Aadmi Party and saying that, look, Arvind Kejriwal was saying that Satyendra Jain was trapped in a false case. He should be given Bharat Ratna, and this is what is coming in the public domain. And we had seen Sambit Patra saying that how Sukesh Chandrashekhar has written in this letter to Lieutenant Governor, where the money was asked to him to pay Satyendra Jain 2 CR per month, and in total he paid around 10 crore to Satyendra Jain and his personal assistants, and he outlined all the details of the meeting which he had with Satyendra Jain and his secretary inside the jail premises. And also Sambit Patra saying that they were in touch even before Satyendra Jain was given the charge of jail. So they were in touch with Sukesh Chandrashekhar since 2015, and it is mentioned in that letter as well that how he wanted to become the part of Aam Aadmi Party, and that discussion happened with Satyendra Jain itself. So now BJP is latching on to this opportunity which they have gotten through this letter which Sukesh Chandrashekhar has written to Lieutenant Governor, which is in the public domain now. The letter has been written by his lawyer on behalf of Sukesh Chandrashekhar, and talking about all the details and the money that he had paid to Satyendra Jain and his PA, mentioning all the details about that in this letter. Absolutely, Arun. The fact that just a short while before this entire letter came into public domain, there was another allegation that was made by the Enforcement Directorate at Satyendra Jain, where CCTV footage was revealed, and it was said that Satyendra Jain is ended up meeting with very, very important witnesses inside the Tihar prison. So all of that put together is going to lead it to a lot of pressure for the Aam Aadmi Party and its minister.
Well, absolutely, absolutely. We have not, heard from Aam Aadmi Party as of now. In fact, there's a press conference which is going on in Gujarat of Arvind Kejriwal. Perhaps, media would ask Arvind Kejriwal about this. Arun, I'm really sorry, but we did have a reaction that has come in of the Aam Aadmi Party chief. He, in fact, has called this fictitious. Now, BJP is strongly responding to all of that. We've seen in the press conference that has just about culminated by Sambit Patra. What else is happening when it comes to going ahead and going forward with the charges that BJP is now riding on? Well, see, BJP has been saying ever since Satyendra Jain put behind the bar, they've been saying that, there is corruption on the part of the money has been taken by Satyendra Jain, and whatever the agencies are doing, that is something which is their work, and they are doing it on fair ground. And of course, on that time, responses coming from the Aam Aadmi Party's side. In fact, Arvind Kejriwal, going ahead and demanding Bharat Ratna for Satyendra Jain. And now, this time around, this letter bomb coming to the fore where Sukesh Chandrashekhar, the Conman, writing this letter to Lieutenant Governor, revealing all the details, the money and the meetings that he held with Satyendra Jain inside the jail, and the way he wanted to become part of Aam Aadmi Party, and how specifically he was pressurized to pay that money as a protection money inside Tihar jail. We had seen in the past the videos of Sukesh Chandrashekhar, the kind of lifestyle which he was getting inside the jail. In fact, a few days ago, there are some reports that even Satyendra Jain was getting that special treatment inside Tihar jail. So various things are emerging at this moment, and BJP is not really, staying behind whatever the opportunities they are getting. They're taking on to Aam Aadmi Party and really hitting badly them at this point in time when MCD elections are very much around the corner. And therefore, Sambit Patra in the end said the people of this country will give answers to Aam Aadmi Party. Right, and Aam Aadmi Party in turn is calling these allegations as fictitious, and also going on to support their claims by saying that nothing was found after the investigations against the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia as well. Let's now cut across some more breaking news.